Hello guys, welcome to the Study Jam by Team Nougat. And in first two sessions, we have discussed about the installation part of Flutter. We have also studied how to set up the Android Studio and VS Code and how to create first Flutter app. And I also hope you have some basic idea of what is Flutter, what is Dart, and how these two are different from each other. So, in this session, we will further enhance our knowledge and study some new stuffs about Flutter. We will also do coding part and see how can we create our first screen in Flutter. So, our main agenda of this session is to study about widgets and app structure. So, these are the following topics which we are going to study in the third session of the app development. The first is app file structure. As you all have created our first Flutter app, and you have seen that some by default files are created, and we will study what are the significance of these files and why they are important. The second topic is widgets. We will study and see what are widgets and how it is used in Flutter, and we will see some common widgets like row, column, container, list view, many more. Then we will move towards widget tree and understand the concept of child parent in widget trees. Then we will study Flutter packages. We will also do implementation of these topics. We will also use some Flutter packages in our app. Then we will see what are the key difference between the stateless and stateful widgets. What are the types of widgets in Flutter? Then we will see how can we manage state, and we will understand what are a state in Flutter. We will understand how can we manage the state with the help of setState. Then at last we will see workflow of Flutter, basically the behind the scene of Flutter from the development phase to deployment phase, how a app can build and how it is actually finally deployed to a app store or play store. So without wasting our time, we will start our this session with app file structure. Before we start building Flutter apps, it's essential to understand the file structure of a Flutter project. This will help us to navigate through the code efficiently and know where to place our files exactly. So let's go through it step by step. So first we will understand what is root directory. When you create a Flutter project using Flutter create my app, it will generate the following structure. And at the root level, we have several important files and folders like lib, Android, iOS, web, build, gitignore, and some configurations file like pubspec.yml, gitignore, analysis options.yml, Android manifest.xml. So these are the important files and folders. So एक काम करते हैं, पहले हम एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एक एक फाइल और फोल्डर का क्या सिग्निफिकेंस है और हाउ these are useful. So first we will create our new Flutter project using Android Studio. You can also create using VS Code. So let give it a name like new Flutter app. It will take few seconds to create. Now we have created our first Flutter app. सबसे पहले हम लोग अपने रूट डायरेक्टरी में जाएंगे प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स और फाइल क्रिएट हुए हैं उन सबको। अब हम लोग ईच वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे हर एक फोल्डर को। सो द फर्स्ट वन इज द लिव फोल्डर. Basically, the lib folder is the most important because it contains all the Dart code that makes up our applications. All the coding part we will do in our app, we will do in the main.dart file and create the several fold files inside the lib. First, now we will look at what is main.dart.
Main.dart is the entry point of our Flutter application. It contains the main function that runs the app. It also initializes the first screen of our app using run my app. Like you all can see, this is the main function, and our app's execution, the execution of code for our app start from this function. The other common folders we will further create in our app inside the lib folders like screens. When we will understand what are states, then we will also create some folders related to providers and many more in further sessions. So this was all about the main folder. तो in the nutshell, main folder से ही हमारा जो कोड है उस वो रन होना स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, and that is why we can say this is the entry point of our Flutter application, and all the code which we write in our Flutter app are will be in lib folder, inside the lib folder. So this is all about the lib folder. Now we will move towards Android. You all can see this is Android folder. It holds Gradle build files and native Android codes. All the important customizations or the code related to Android are will be in the Android folder. For example, let's explore the Android manifest. It is inside the app main. Let's suppose this is the file inside the Android. Basically, in this file, we will add the permission. Suppose एक ऐप तुम लोग क्रिएट कर रहे हैं हम, और हमें कैमरा का एक्सेस चाहिए अपने लोकल डिवाइस पे, तो उसका कुछ कोड लिखना होगा ना परमिशन के लिए, तो वो हम लोग एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में लिखते हैं। तो ऑल भी रिलेटेड कोड जो भी होता है एंड्रॉयड रिलेटेड हम लोग एंड्रॉयड में लिखते हैं। सिमिलरली iOS के लिए iOS में लिखेंगे, और विंडोज और वेब के लिए रिस्पेक्टिवली विंडोज और वेब में लिखेंगे। git ignore is a configuration file. अच्छा, अभी सभी लोग को एक आइडिया लग गया होगा ना क्या गिट होता है, क्या गिटहब होता है ना? तो गिट इग्नोर के अंदर वो सारे फाइल्स आते हैं जिनको गिट इग्नोर कर देता है, और वो गिटहब पे अपलोड नहीं होता है। तो ऐसे क्या होता है ना कि हमारा साइज जो होता है फाइनल प्रोजेक्ट का जो हम लोग अपलोड करते हैं गिटहब पे, वो रिड्यूस हो जाता है। ऑल द मेटा डेटास रिलेटेड टू आवर ऐप आर स्टोर्ड इन दिस फाइल. You all can see that the platform, version, base version, version name, ID, etc. Many more. These are the common file configuration files. The next one is pubspec.yml. Here it is. This is the configuration file again, where we define the dependencies, assets, and funds for our app. And this is pubspec.lock. It is an auto-generated file that locks the dependency versions used in the project. And there is a README file. README file, it is a markdown file where we can document our project in detail. अच्छा, सपोज हमारा प्रोजेक्ट कोई देख रहा है जिसे कुछ पता नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट में क्या किया है, तो एक ऐसा फाइल होना चाहिए ना जो एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, नो हाउ पता है कि कैसे हमने मैनेज किया अपने फाइल स्ट्रक्चर को, और वो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सारा इंसाइट्स का अंदाजा लगा पाए। तो सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट हम डॉक्यूमेंट करते हैं इनसाइड द रीडमी फाइल. So these are the some important file and folder which you all have to know before starting with the coding part. तो अभी के लिए हमें इन सभी के बारे में नहीं सोचना है उतना, हम अभी फोकस करेंगे सिर्फ अपने लिव के अंदर, जहाँ पे अपना मेन हम लोग कोडिंग पार्ट करेंगे और अपना फ्लटर ऐप बनाएंगे, और थोड़ा बहुत पब स्पेक वाईएमएल के अंदर, जहाँ पे हम लोग अपने एसेट्स को डिफाइन करेंगे, जो भी हम लोग इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे उसको। सो ये एक ओवरव्यू था ऐप के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। और अगेन हमारा भी सिर्फ काम होगा लिव के अंदर, हम सारा कोडिंग पार्ट अभी लिव के अंदर करेंगे, और जैसे जैसे वी विल मूव फॉरवर्ड, then we will get an idea of what are the use of other files. So this is all about the app. Now we all have a basic idea of about the files and folders in a Flutter app. Now we will understand what is widgets. Widgets are the fundamental building block of a Flutter app's user interface. Everything in Flutter, from a simple button to a complex screen layout, is a widget. Understanding widgets is crucial for building efficient and responsive Flutter application. And basically, everything you see in Flutter app is a widgets.
like text, text field, images, and etc. First of all, we will understand about two important widgets, that is Material App and the Scaffold. Material App is a main widget that set your Flutter app with Google's Material Design, which gives apps a nice look and a feel. Basically, it provides navigations, themes, font, and many more. We will see in the when we implement this stuffs in our code. The second one is the scaffold. A scaffold is a basic structure that provides a layout for our app's UI. Basically, it gives you a pre-built app bar, body, floating button, drawers, bottom navigation bar, and many more other widgets. It's help in quickly under building a standard-looking app. So these are two important widgets, that is Material App and Scaffold. Now we will move towards the other widgets that will create inside the Scaffold. I have segregated the widgets into multiple types like basic widgets. The second one is layout and structural widget. The third one is input and interaction. The fourth one is scrolling and list view. So for the better understanding, I have segregated these widgets into a different headings, and each one by one we will implement in our code. So अभी के लिए हम लोग चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। हमने जो अपना अब ऐप बनाया था फ्लटर ऐप करके, उसको एक बार देखते हैं। सो हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं ना कोई भी फ्लटर ऐप प्रोजेक्ट, तो हमारा एक बाय डिफॉल्ट कोड लिख के आता है जो कि होता है काउंटर ऐप का। हमने ये पहले भी देख रखा है इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो देख पा रहे होगे यहाँ पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे यहाँ पे एक स्क्रीन खुला है जो कि काउंटर ऐप का है। ये ऐप का फंक्शनैलिटी इतना ही सा है कि वंस आई क्रिएट ऑन दिस प्लस बटन, नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स, वो नंबर इंक्रीज करते जाएगा। ये एक सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है, और हम लोग यहाँ पे स्टेट को मैनेज कर रहे हैं यूजिंग सेट स्टेट। हम लोग आगे देखेंगे सेट स्टेट क्या होता है। ये है। तो अभी के लिए हमारा कहने का ये वो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरीथिंग इन 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 फ्लटर इज अ विजेट। यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा है फ्लटर डेमो होम पेज। इट इज अ विजिट। द ऐप बार इज अ विजिट। द टेक्स्ट रिटन everywhere is a visit. This floating point action button is a visit. Everything you see is a visit. So we will start coding from beginning and implement some common widgets. So first we will clear our Now first we will import our first package, that is material.dart, and now I will create a function. This is the main function which return void, and inside the main function there is a command called run app. Run app basically initializes our Flutter app, and after that हम create करेंगे यहाँ पे my app class को। देखो सबसे पहले सभी ने अगर क्लास एडिट किया होगा डार्ट का, तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस क्या होता है और स्टेटलेस विजिट क्या है। विजिट्स हम देखेंगे आगे क्या है स्टेटलेस विजिट, और क्लासेस क्या है और किस तरीके से वो स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड वगैरह कर रहा है। तो अभी के लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और जो रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप को। ये जो अननेसेसरी चीज है इसको अभी हटा देते हैं, बाद में देखेंगे इस बारे में क्या है ये। उसके बाद होम में हम यहाँ पे स्कैफोल्ड करेंगे। स्कैफोल्ड आ गया। ये स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐप बार बनाए क्रिएट करेंगे। उसके अंदर बॉडी है, सेंटर है। तो अभी इसको एक बार रन कर लेते हैं, हॉट रिलोड कर लेते हैं। जैसे ही हम हॉट रिलोड करते हैं वैसे ही जीआईटी होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। फर्दर और देखेंगे क्या होता है उस बारे में। इट विल टेक फ्यू सेकेंड, जस्ट वेट। तो ये हमारा पहला फ्लटर ऐप रन हो गया है, जो कि हमने कोड किया था हेलो वर्ल्ड ऐप बार में, और यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब एनालाइज करते हैं हमारे कोड को और किस तरह से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है उसके ऐप बार पे लिखा हुआ, ये भी एक विजिट है। हमने जो ऐप बार बनाया वो भी एक विजिट बनाया, और जो टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये भी एक विजिट है। तो वन बाय वन हम सारे विजिट को गो थ्रू करते हैं, क्या है कौन सा विजिट। तो पहला हमने यहाँ पे यूज किया है ऐप बार विजिट। अच्छा, मटेरियल और स्कैफोल्ड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है क्या है।
स्कैफोल्ड के अंदर हमने ऐप बार को यूज किया है। तो बेसिकली ऐप बार इज द टॉप नेविगेशन बार इन अ फ्लटर एप्लीकेशन, और ये प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट स्पेस फॉर ब्रांडिंग, नेविगेशन एंड एक्शंस। और ये कंटेन क्या क्या करता है, टाइटल है, नेविगेशन आइकॉन्स है, और मेनी मोर थिंग्स। इसको हम लोग प्लेस किए यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर एज इट्स ऐप बार प्रॉपर्टीज। ऐप बार प्रॉपर्टी के अंदर हमने ऐप बार को प्लेस किया है। और भी हम जान सकते हैं ऐप बार के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे होवर करते हैं ना, उसके बारे में काफी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, जो कि हमको गाइड करता है कि और क्या क्या चीजें, फीचर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बात है ये। हमने ऐप बार के अंदर एक टेक्स्ट को यूज किया है जो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। यहाँ पे हम स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके टेक्स्ट कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं इजीली। जैसे ये ऑलरेडी पहले से ब्लैक है, तो हम यहाँ पे इसे ब्लू कर देंगे, और हॉट रिलोड कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ देखो ब्लू हो गया ये। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं, फंट साइज को हम बढ़ा सकते हैं। हमने 20 कर दिया। आई गेस ये ऑलरेडी 20 है, इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं आया। 30 करके देखते हैं। साइज बढ़ गया। सिमिलरली फंट वेट हम बढ़ा सकते हैं। फंट वेट को हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। तो ये सारी प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट के अंदर हम यूज करते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कलर है, फंट साइज है, फंट वेट है, एक्सेट्रा। अगेन हम ऐसे ही होवर करेंगे, हमें और आइडिया लगेगा कि और चीज हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे डेकोरेशन है, और भी कई चीजें, शैडो वगैरह है। तो एक्सप्लोर कर सकते हो जब तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे इसको। तो अगेन ऐप बार के अंदर होवर तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था। तो टाइटल इज अ property of an app bar visit, and it's usually a text visit that display the name of the screen or application. और वही अगेन, it helps the user to understand the content of the page that they are viewing. Now we will move towards body. We have discussed what is app bar, what is title. Now it is a time for a body. Basically, body is a property of a scaffold that holds the main content of the screen. है ना। जो बॉडी है वो स्क्रीन का मेन कंटेंट को होल्ड करता है, ठीक है। इसके अंदर हम कई एक विजिट्स का यूज करते हैं जो कि हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। और जैसे कॉलम है, रो है, कंटेनर है, ठीक है। बॉडी इज बॉडी इज वेयर मोस्ट ऑफ द यूआई एलिमेंट एंड इंटरैक्टिव कंपोनेंट ऑफ एप्स आर प्लेस्ड, ठीक है। तो देखो बॉडी के अंदर एक चाइल्ड है जो कि रिटर्न कर रहा है यहाँ पे टेक्स्ट को, जो कि हमारे सेंटर ऑफ द स्क्रीन है वहां पे। तो देख रहे हो यहाँ पे हमने सेंटर विजिट का यूज किया है। एक बार सेंटर विजिट को रिमूव कर लेते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं कैसे ये विजिट काम कर रहा है। जैसे देखो हमने जैसे इसको सेंटर को रिमूव कर दिया, हेलो वर्ल्ड हमारा ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर पे जाके प्लेस हो गया। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको व्रैप कर देंगे सेंटर के साथ, ये हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन प्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सेंटर विजिट अलाइन इट्स चाइल्ड विजिट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। And again, it is useful when a visit needs to be positioned in the middle without requiring additional alignment property. ठीक है। तो ये हमारा सेंटर विजिट है। अब एक काम करते हैं, सेंटर विजिट को हम अगेन, हाँ, सेंटर विजिट के अंदर हमने टेक्स्ट को यूज किया, अगेन वही सेम टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे ऐप बार में यूज किया था। तो अगेन हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हैं, लाइक स्टाइल वगैरह। एक सेकेंड, स्टाइल आ गया हमारा, फ्रंट वेट आ गया। जैसे हमने हॉट रिलोड किया, देखो अगेन हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया बड़ा सा लिख के, है ना। तो ये सारा कुछ हम यूज करते हैं, और भी कई सारे प्रॉपर्टी है। फर्दर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इसको। तो अभी के लिए हम जैसे सेंटर को हटा देते हैं, और अगेन कुछ अलग चीज और एक्सप्लोर करते हैं। रिमूव दिस विजिट, हमने सेंटर को हटा दिया। अब हम जानेंगे पैडिंग क्या है। तो बेसिकली पहले पैडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो हमने पैडिंग से रैप कर दिया हमारे चाइल्ड विजिट को, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पैडिंग विजिट एड्स स्पेस अराउंड इट्स चाइल्ड विजिट। तो यहाँ पे पैडिंग का चाइल्ड विजिट कौन सा है, ये टेक्स्ट विजिट है। एक बार एक काम करते हैं, इसको हॉट रिलोड करते हैं। देखो अगेन हमारा हॉट रिलोड, हमने जैसे सेंटर को हटा दिया है ना, इसलिए हॉट रिलोड, इसलिए हेलो वर्ल्ड हमारा ऊपर में आके आ रहा है, वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैडिंग विजिट क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर रहा है अराउंड इट्स चाइल्ड विजिट, दैट इज द टेक्स्ट विजिट। और ये इट्स प्रिवेंट कर रहा है टचिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्क्रीन और अदर विजिट्स, ठीक है। बेसिकली पैडिंग enhances and improve the layout of the structure
by creating appropriate spacing between the elements। तो इन द नटसेल हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं स्पेसेस क्रिएट करने में। तो यहाँ पे हमने यूज किया है एज इंसेट्स ऑल 8। इसका मतलब ये है कि इस विजेट्स मतलब चारों तरफ से ये 8 का स्पेसिंग कर दिया। हमने यहाँ पे 16 कर देते हैं तो ये अगेन हमारा पैडिंग जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैडिंग देख लिया, पैडिंग क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या विजिट, कौन कौन से विजिट एक्सप्लोर किए, जैसे ऐप बार के बाद फिर टेक्स्ट विजिट एक्सप्लोर किया, पैडिंग हुआ, टेक्स्ट हुआ। इसको फर्दर हम चाहें तो अगेन इसको कहाँ गया हमारा सेंटर से रैप कर दिया तो सेंटर पे आ गया फिर से ये। तो ये हम लोग प्ले कर सकते हैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे करके। तो हमारा अगला विजिट है वो है कॉलम विजिट। तो हम पहले कॉलम विजिट को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे चाइल्ड के अंदर। तो हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे आएगा हमारा कॉलम विजिट आ गया। और कॉलम हमारा यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन। और जैसे हम यहाँ पे लिख दिए टेक्स्ट, एक मिनट जस्ट सेकेंड, txt यहाँ पे हम लिख देते हैं FIRST। फर्स्ट कॉलम हमने लिख दिया और यहाँ पे रन किया, देखते हैं ये कैसा होता है। एक मिनट अगेन हम यहाँ पे हॉट रीलोड करेंगे इसे। हमारा फर्स्ट कॉलम लिख के आ गया। तो ये यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर अगेन क्या यूज किया है, कॉलम विजिट को यूज किया है। तो कॉलम विजिट क्या कर रहा है, कॉलम विजिट अरेंज कर रहा है मल्टीपल चाइल्ड विजिट्स को इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। बेसिकली इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड लेआउट इन विच वेयर क्या होता है ना, एलिमेंट आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इट ऑल्सो सपोर्ट अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, देखेंगे आगे कैसे हम इसको अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम का यूज किया जिसके अंदर चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पहला यूज किया फर्स्ट कॉलम, हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिख देते हैं, चलो यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे फोर्थ लिख देते हैं, चलो टेक्स्ट फोर्थ कॉलम। यहाँ पे फिर हम इसको रन करेंगे, आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो इसका साइज थोड़ा फोर्थ वाले को हटा दो, यहाँ पे साइज का थोड़ा बढ़ा देते हैं स्टाइल का यूज करके अगेन। तो स्टाइल का यूज करके हमने इसका साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज हमने सपोज हम 50 यहाँ पे कर देते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। अगेन इसको हम कॉपी करेंगे और नेक्स्ट टू लाइन में उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो हम मल्टीपल चिल्ड्रंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे रो में और ये अरेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम करके। ठीक है, अगेन हम और भी इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा, तो एक हमारा यहाँ पे नया प्रॉब्लम आया, जैसे ही हम कॉलम के अंदर हम मल्टीपल चिल्ड्रंस को इंसर्ट करते गए, देखो यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो हो गया, कंटेंट लिख रहा है ना 22 पिक्सल्स ओवरफ्लो फ्रॉम द स्क्रीन ऐसे करके। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं जो कि है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का। ठीक है, तो हम अपने इसको रैप करेंगे विजिट से, जो कि है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। जैसे ही हमने अपने कॉलम वाले विजिट को रैप कर दिया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, अब क्या होगा, हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं अपने कॉलम्स को, जैसे लाइक दिस। देखो स्क्रॉल वाला फीचर हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफी गंदा सा दिख रहा है। आई गेस सभी को समझ आ गया होगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये हमारा यूजफुल होता है फॉर डिस्प्लेइंग लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्म्स और लिस्ट दैट माइट नॉट फिट विद इन द अवेलेबल स्क्रीन स्पेस, है ना। उसके बाद हम स्क्रॉल डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। देखो अगेन यहाँ पे जैसे हम होवर करते हैं ना, उस विजेट के बारे में सारा कुछ लिख के आ जाता है। सो इट इज इजी टू एक्सप्लोर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है ना।
अभी के लिए हम हटा देते हैं इतना सब कुछ और बस दो रहने देते हैं। सपोज करो हमारे पास दो विजिट है, हमें दोनों के बीच में स्पेस को थोड़ा इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और विजिट का यूज करेंगे जो कि है साइज्ड बॉक्स। यहाँ पे हम यूज करते हैं साइज्ड बॉक्स। Size box. Basically, size box is a widget which is used to create a box with a fixed width and height. And again, it is commonly used to add a space between the widgets or to set specific dimension for a widget. तो यहाँ पे हम specific height set कर देंगे, like I have set 20. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पहले वाले चाइल्ड विजिट और दूसरे वाले चाइल्ड विजिट के बीच में 20 का स्पेसिंग आ गया है जो कि फिक्स्ड स्पेसिंग है, ठीक है। अगेन हम इस चीज को कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया, देखो यहाँ पे हमने साइज बॉक्स यूज किया है और दोनों के पहले और दूसरे के बीच में स्पेसिंग आ गया है, बट वो नहीं आया नीचे वाले में नहीं आया। यहाँ पे हमने साइज बॉक्स यूज नहीं किया है, तो ये हमारा साइज बॉक्स विजिट था। अननेसेसरी चीज फिर हम हटा देते हैं, जिसे हमारे समझने के लिए था। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, अभी तक हमने स्कैफोल्ड के बारे में जाना क्या है, मटेरियल ऐप जान लिया क्या है, टेक्स्ट के बारे में जाना, पैडिंग समझा, उसके बाद सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू समझा, कॉलम समझा, और उसके अंदर चिल्ड्रन है, मल्टीपल विजिट्स हम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में जाना, ठीक है। तो हमें एक बेसिक ओवरव्यू पता लग गया कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। हम अपने फिर से स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं आगे हमने क्या क्या देखा है अभी तक। तो बेसिक विजिट्स में हमने टेक्स्ट जान लिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हमने फ्लटर ऐप में, वो हम बाद में देखेंगे। अभी स्ट्रक्चर लेआउट में हमने कंटेनर देख ली, कंटेनर हमें देखना बाकी है, रो एंड कॉलम देख लिया, साइज बॉक्स देख लिया, स्टैक आगे हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद और भी कुछ कॉमन विजिट है। देखो मैं सब कुछ तो अभी नहीं बता पाऊंगा इस लेक्चर में ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट यहाँ पे मैंने बहुत जो कॉमनली यूज विजिट्स है उसको मेंशन कर रखा है, तो इसको तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से भी, है ना, क्या होता है। बट अभी जितना विजिट्स हम जितना डिस्कस करेंगे क्लास में, फ्यूचर में स्टडी जैम्स होंगे, उतने विजिट्स का ही यूज होगा उस स्टडी जैम्स में। फर्दर एक आध दो विजिट नए पढ़ने पड़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सीख करके इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपने जो भी स्टडी जैम के टास्क होंगे करने के लिए, ठीक है। तो हमें अभी हम जितना ही मैं विजिट्स पढ़े हैं उनमें दो बाकी है हमें सीखना। एक है कंटेनर के बारे में और एक इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं उस बारे में। उसके बाद हम एक बेसिक सा कुछ यूआई वगैरह बनाएंगे, लॉगिन पेज वगैरह, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे के कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। नाउ वी विल ऐड इमेज to the Flutter app. So first we will move towards the root directory of our project, and inside a root directory we will create a new folder that is assets, and inside the asset we will create again a new folder that is images. And now inside the image I have to paste my image. Now I will go to my drive and directory. We will drag and drop the image to the image folder, and now there is image in our image folder. In the YML file we will go to the assets and remove the comments. The proper alignment is necessary, alignment indentation. Now I will write the name of my image, that is demo.png. The name should be same, and in the main.dart I will write the code to add the image. Images, assets, image. Now I will write the path of the image, assets, images, and demo dot, I guess it was png. Let me again check. Yeah, it is png. Now I will run my code.
I think there is some error. No file found. Let me check what happened. Side YML. I will run pubget here. And again run the code. What is happening? Now I will run my code. It will take few seconds to load. Now my image is loaded. So I have missed the assets here. That's why it is not running. Now we have successfully added our image. Now I can also we can also select the also change the alignment of the image. Like we can wrap this with center. Now the image will be now it is placed in the center. For now I will remove this center. So we have learned how to add the image. Now we will see what is container. Basically, container is a widget that is flexible box that can hold a single child, and it allows customizations of property that allows to change the size, padding, margin, background color, borders, and size and shadows. Basically, it is commonly used to structure and style the UI components. We can also create our own buttons with the help of container. So first of all, implement containers. Inside it, we will set the decoration, box decoration. We'll set the color of the container, like say no content, that is color dot colors. Just a minute. Colors dot, can select blue, and now I will run it. Select the height 10, width also 10. Now I will run. See, this is little container here. Now I have to increase the size. Let set it to 50. Now the size of container is increased. I will add a sized box here. Let's say of height 20 again. So I have missed a comma. Now we have created a container. As we know, container return the child. Then I can also create a child, and inside the child I can create my own text and write my container inside it. And now I will run it. Now my container written, and I can also change the style that I have already mentioned before. Text style, font size. First of all, I will change the color to white to make it more visible and clear. I guess I have to increase the size to make it more visible, and also change the height and width. Inside the container, I also place my text to the center. Just wait a second. As I have previously told that the center widget place the content inside it to the center of its parent widget. So container is a parent widget,
and the child widget is text. And once I wrap the text with the center, then what center does, it place the my container text in the center of the container widget. So we have successfully created the container. You can also explore the some other properties like shadow, elevation, round corners. Uh, when we hover on the container, we can say different more properties of the container. You all can explore. For now, I think this is enough to begin with. So we have learned about the many things like app bar, padding, container, size box. These are the basic widgets which you need to learn to begin with. And believe me, with using only this few widgets, I guess 6 or 7, you can complete the Flutter Study Jam tasks, which is necessary for induction. And now we will move towards our PPT, and we will see what we have completed till now. So from the starting, we have discussed what is file structure, Flutter file structure. Then we have seen how the different folders files have different significance in the Flutter app. Then we have explored configuration file, and after that we have learned that we have to write all the code into the main dart. Then we have moved towards widgets, and we have explored what are widgets. They are the building blocks, and everything we will see on the screen is a widgets. Then we have seen two widgets, important widgets, that is material app and a scaffold. We have explored some important widgets like text, images. You can also explore more on your own. Mm, Now we will move towards widget tree. So first of all, we will understand what are widget tree in the Flutter. Basically, it is a hierarchical structure that represents the UI of the mm, widget in the Flutter app. Basically, each widget is a node with a parent-child relationship, and it defines how an app user interface is organized. Basically, it is a tree-like data structure that show how widgets are arranged in a parent-child relationship. So, this is a type of widget in a widget tree, that is parent widget and a child widget. You all can see. First of all, let me show you with the code. So, like suppose this is a container, and container is our parent widget, and inside the container this is a child widget, that is the text written my container. So this is the parent child relationship between the container and the text widget. So this is what I am trying to make you understand about the widget tree. Similarly, this is a diagram of a widget tree of the counter app that we have already seen. So let assume this is the our UI screen, and this is our tree. We all know our app start with the my app, and after the my app there is a material app, and inside the material app there is my homepage. My homepage is basically a class which return scaffold, and inside the scaffold we have seen there is a app bar, and app bar is a parent widget for the text, that is the child widget of app bar. Again, inside the scaffold there is a text center, and inside the center there is column child widget, and center is the parent widget for the column. Again, we can add multiple children inside the column widget. That will be the obviously that will be the children widget, that is different text. And there is a you can see there is a floating action button, and inside the floating action button there is an icon acts like a again child widget for the parent widget of the that is the button. So this is the whole widget tree for the UI screen of the counter app. I guess you all have understood the concept of widget tree and how the tree actually works in the Flutter app. Now we have covered all the basic concepts about the widgets. We have also seen the implementation of the common widgets. Now it's time
to create our first UI page. And now we are creating the UI page of login screen of Instagram. And first of all, we will import the logo. We have already imported the Instagram logo, and we will also edit the pub.yml file and change it to logo.png. Now I will create a file in my lib folder of name colors dot dart. In the color dot dart, I will specify the color which we are using in our UI page, and such so that we can directly use it in our main dart. Now I will import material dot dart. I will import colors dot dart. Now again I will create void main, and inside void, let me correct, I have did some mistake. Inside the void main, I will create run app my app, and now I will create class name my app. If it is going too slow, then you can also fast forward. And now I will create stateless wizard. I will create one missing override. Now it will return material app. Inside home, it will return login page. Now I will create class login page, and which extends to stateless wizard. I will create override. Now it will return scaffold, and till now the same thing we have already seen. Now inside the I will create body. Inside the body, I will create what I will create is child. No, just a minute. I will create child. Now inside it, I will create container. Side container, I will set the width at as double dot infinity. Now I will set the height of the container, and I will here use media query. Media, just a minute. I will take the height from media query. Basically, media query is a widget that provides information about the device screen and user preferences. And now, after that, I will set the color. Set the color as dark background color, which we have already defined in our color dot dart. Now I will create child, and inside the child, I will create column. Inside the column, I will declare main axis alignment dot center, and also cross axis alignment dot center. It will align the column to the center. Now inside it, I will create my children. Inside children, I will create a spacer, and I will set the flex to, I guess value 2 will be enough. Now I think there is some error. There is missing colon. There is one more error. One more semicolon is missing here. Now I think I should run the code and see what's going to change. Just wait few seconds. Now our code is successfully executed, and I have changed the background color that you can see. And inside the children, I have give the spacer. Now I will add the image. So first of all, you all know I have already added my image to the asset folder. Now I will add the image. I will write the path of the image. I guess it is login logo.png. Now you all can see the image
is already on the screen. Now I will use uh, I fix the height of the image. Just a minute. I will fix it to 60, I guess. Now it is perfect. After that, I will use sized box with height 50. I think it will be enough. Now inside the child box, I will add text form field, and text form field I will set my cursor color. Let the color be, I guess, white. Colors dot white. Oh, there is a spelling mistake. I think it is correct. Now there is some error, I guess. Again, I have missed something. Oh, there will be a comma. Now I will hot reload. Now I have to add some styles to it. I will add text style, font size to 10, colors dot white. Now I will add some decoration. In decoration, I will add input decoration. And I will add inside, just a minute. Inside input, then I will add content. Oh, there is something error. Now it is okay. Yeah, it is successfully executed. Now I will add content padding. Dot symmetric. Vertical, I guess, 1. And horizontal 14. After that, I will add hint text, that is phone number, email, or username. After that, I will add hint style, that is text style, font size again 10, and color, I guess secondary color. Oh, secondary color. Now I will run. Now you can see at the bottom there is a text field, although I have to align it further. After the hint style and hint text, I will add enabled border, and inside this I will add outline input border. I will fix the border radius dot circular, and it will be 10. Border side color dot white. Just a minute. Colors dot white. Now for more decoration, I will also add focused border. First of all, I think there is some error occurred. Let me fix it first of all. I have added the border. Now
We will move for further. Just a minute. I will add now focused border. I will give the circular radius. I will set it to 10. Now I think it is good. It looks good. Now I will add sized box of height. Let's say 20. Now I will run my code. Now I think it looks good. Further, I have to add more padding, I guess. Now this is my text form field. From here to let me make it clear. Now this is my text form field. Now I will just copy the whole stuff and paste it here. Now I will just change the name, that is password, and again I will run it. It looks good. Further, I will add some padding. Similarly, in the above form field, I will also add some more padding. Now I will add the other things like forgot password or the login button. So I will use alignment here. Alignment. Just wait. Alignment dot center right. I will use. After that, I will use the child. Just wait. There will be nothing, and inside the child there will be a text written, that is forgot password, and I will add some style to the forgot password, that is color, that is primary color, and the font size. Just wait. Size, I guess 15. Let me run it. Now it looks good. Now you can see I can click it, but nothing can occur because nothing occurs because on press there is void function. It returns nothing. This is my alignment. Now I will have to add the elevated button. First of all, I will add the sized box again to create empty space of height, I guess 10. Now let me run it. Now you can see it is a bit move upward. Now increase the size to 20. After that, I will use here elevated button, and on pressed again nothing will happen. And as a child, it will return text. And what will be the text? The text will be login. Login. Now I will also add some styles to it. Style में
In the style, I will add elevated. Just wait. I will use primary color as my background color. Now I will add text. First of all, I think I should run. Now it looks good. I can increase the font size. Now it looks good. After that, I will add some spacer. Oh, there is some error. Now I will add a text button. I will use row here, and inside it, I will add now color. I will change the color to primary color. Now our UI page is ready. Some changes I have to do more, like after the image, I have to create a sized box of height, I guess 50 or 20, let's say. I should increase it more. Now it looks good. In the text form field, I will add some padding.
Let me correct it. Now it looks good. Similarly, in this also I will add some padding. As you see, we have successfully created our first login page UI using Flutter, and here is the code. We can further optimize when we learn more concepts like how. Now it's time to understand what are the states in the Flutter. Basically, state refers to the data that cannot change over the period of time in the Flutter app. तो अभी क्या क्या हो रहा था ना कि हमारा जो एग्जांपल था काउंटर ऐप का, उसमें हम क्या कर रहे थे, फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहे थे, हमारा जो काउंटर था वो 1 से इंक्रीज हो जा रहा था, 1 से बढ़ जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम बटन क्लिक करते हैं, हमारा जो विजिट विजिट है वो रिबिल्ड होता है ना। लेकिन लेकिन क्या होता है ना कि हम अभी तक यूज कर रहे थे स्टेटलेस विजिट। स्टेटलेस विजिट में क्या होता है कि वंस इट बिल्ड इट डजंट चेंज। तो हमको ऐसा करने के लिए कि हमारा जो विजिट है वो रिबिल्ड हो जाए, हम यूज करते हैं स्टेटफुल विजिट का। ठीक है। Similarly, when the stateful visit notifies the Flutter that the change has occurred, and when it called, it triggers a rebuild of the UI to reflect the updated change, है ना। और यहाँ पे इसको implement करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, that is set state। और अगेन हम क्यों स्टेट चेंज करेंगे किसी भी स्क्रीन का, क्यों डेटा चेंज करेंगे, टू मेक द UI इंटरेक्टिव एंड व्हेन वी यूज एलिमेंट्स लाइक बटन, फॉर्म्स एंड एनिमेशंस। तो अब एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सेटस्टेट आखिर काम कैसे करता है, और अगेन स्टार्टिंग से कोड करेंगे और समझेंगे कैसे काम करता है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले पैकेज, अगेन मटेरियल डॉट डार्ट, उसके बाद अगेन वॉइड मेन। ओहो, जस्ट वेट, वॉइड मेन। यहाँ पे रन करेंगे रन ऐप, यहाँ पे रन ऐप करेंगे और यहाँ पे दे देंगे नाम, लेट से माई ऐप, एंड नाउ we will create a class my app which extends stateless visit, will add the missing override. Similarly, we will return again material app inside home counter screen. Now I will create a new class counter screen which extends. Now this time we will use stateful visit because we have to change the data on in the screen. That's why we will use stateful visit.
scaffold, and inside the scaffold I will add the app bar again, like we have already did the same in previous part. App bar, and let's say app inside the app bar title, give it state example. Now I will run it. I will start hot reload. It will take few seconds. Now I will add my body. Inside the body I will add column, and inside the column I will add children, and inside the children I will add text data, and I will add counter, and I will refer to counter which we have created, which we are going to create. Sorry. Style, I will add some text style. Font size, let it be 20. Font weight, I guess bold. Now there is some error, like we have not declared the counter. Anyway, we will move to the next and add the sized box with height, let's say 20. Then we will add elevated button on pressed. This time will be write increment counter, and in child we will add text, that is increment counter. Now at last we have to create our setState function. Now here we will write some stuffs, like we will initialize our counter and we will set it to 0. Now we create void function means it returns nothing. Then we will create increment counter, and in this function we will use setState, and inside the setState we'll increment the counter. And I think it's over. Now it's time to run our code. This is the basic example. Let me do some more styling, like web center. Just wait. We can also, I can also do some padding. Now as I click on increment counter, the counter will automatically increase. And this is an example of set state. We are managing the state with the help of set state. Now we all have an idea to how to manage the state using the set state function in Flutter, and we have also seen that how to create widgets, and we have also learned to create a UI page of Instagram login. Now it's time to move forward, and in this part we will understand the Flutter behind the scene workflow and how actually the Flutter app uh, created and finally deployed to the
Play Store or App Store. So we are going to study this behind the scene workflow in the five phase. Now the first one is the development phase. In the development phase, we decide the specific project structure and write the code using the Dart with pre-built or custom widgets. In the second phase, that is the compilation phase, the compilation of the code that we have already written takes place. The compilation, in the case of compilation, there are two types of compilation, that is the JIT and the AOT. JIT is the just-in-time compilation. Uh, when we click on the hot reload button in the Flutter, JIT compilation takes place. It interprets the code at the runtime and enables fast development. In the release mode, AOT compilation takes place, that is the ahead of time, which converts the Dart code to native machine code and which enhances the performance and removes Dart runtime. The fourth phase is the build and packaging phase. In this phase, our compiled Dart code are packed into APK format, APK bundles, and in the case of iOS, our compiled Dart code are packed into Flutter assets. So this is the building and packaging phase, and the final step is the deployment phase. In the deployment, uh, either we can distribute the APK to the local devices or directly we can upload the APK to Play Store. And similarly in the iOS, similar things take place. Instead of Play Store, we will upload the app bundles in App Store. So these are the four steps of from development to deployment. That is development phase, compilation phase, and build and packaging phase, and deployment phase. So this is the basic workflow of Flutter behind the scene from development to deployment. So in today's session, we have discussed the lot of things. We have studied about visit tree, common widgets, and we have also learned how to manage the state. So we have also discussed what is a file structure of the Flutter. So for today, I think this is enough. And in the next session, we will study how we can integrate the database to our Flutter app. And for today, thank you. If you have any query, you can ask in the group. So thank you.